Happy Saturday, friends. This is Rajdeep presenting your favorite TV show, Harmony on ATN. I hope you're all enjoying your day today in spite of being a little chilly outside. I promise to bring you some spring spree in our next episode. I hope you all enjoyed and liked Satyamev Jayate. Because it's going to run for another 4 weeks, we are going to telecast our Harmony show at 11:30 a.m. for another 4 weeks, Mountain Standard Time. In our first segment, we have a report on Edmonton Humane Society, which is a non-profitable organization working for helping the abused and homeless animals. Dave has more report to show. Hi, Varun. How are you? I'm very good, thank you. Yeah. Can you please tell us something about Edmonton Humane Society? Well, Edmonton Humane Society, we're a nonprofit organization. We rely on donors, funds, and of course a lot of volunteers. And what we like to do is make sure that animals are properly looked after. So there's many reasons why animals are brought to us, cats and dogs, and of course other animals as well. We have birds here. We've brought reptiles in, including snakes and some other crawlier of the variety, but we want to make sure that we help control the pet population. And the important thing is spaying and neutering our pets and controlling that from a healthy standpoint and making sure that all these animals, no matter how they're brought to us, are then found and put back into a forever home with a loving, caring family that'll look after them for the rest of their lives. So, Warren, if somebody wants to help Edmonton Humane Society in a financial way, or somebody wants to volunteer here, so what is the procedure? How they can help you guys? Well, yeah, there's many ways you can help us out, and that is through either donations via money or even supplies. Obviously, we need old blankets for our animals, our cats and dogs. We take food in, and of course, on a money standpoint, you can always go to our website, www.edmontonhumanesociety.com. Everything's on there, all our information, and you can help us out that way as well. Or it's always good to come on down too. We have a beautiful facility here in northwestern Edmonton. It's fantastic. We've got the cat condos. We've got lots of living space for the dogs. And just check it out and talk to all our staff, and they'll help you out. Now, on the volunteer side of things, we're always taking volunteers, of course, but we do have certain times a year where we accept volunteers. And coming up in April, the first week of April, we actually have a volunteer opening, so people can apply for that. And we have a process where you come down and we'll interview you and make sure that your needs are met and our needs are met as well. Of course, being a nonprofit organization, we rely on volunteers quite a bit, and they're just fantastic. We have a great group of volunteers, and they help us out so much, from taking the dogs out like Eddie here outside, spending time with them inside, cleaning the cat condos, from A to Z. They do it all here, and with a smile as well. It's one of the things here we have here at the Edmonton Humane Society is we have a great canine enrichment center, and our behaviorists, we have a whole team of behaviorists, can answer those questions for you. If maybe your animal is acting out a little bit or just doing something a little bit different, you can come down here, ask them, bring the animal in, take some classes as well. They have a great center here, and again, it's one of those things you can come down to the center or find us online as well. When can you tell us about the procedure, what person has to follow to adopt any animal? Sure. One of the most important things is coming down to get to know the animal and what fits you and your family or your home as well. It's one of those things we want to make sure that the animal is going to be in the right situation when they leave here. So we, of course, have all the animals listed online that are up for adoption. And they go through a process. When they come through to us, they get checked out. If they need to be spayed or neutered, we do that. We give them their shots, make sure they're on the healthy side before they come onto the floor. So you're getting a healthy animal. And then we just want you to come in and spend some time with them. We have lots of rooms where you can come and interact and bring your other pets down, bring your kids down as well, and make sure that type of animal, whether it's a cat or a dog or a bird, we even have a pig in here,
that maybe that's what you need for your family. We just want you to spend time. And then, of course, our adoption center will take it from there. You fill out the application. We have certain fees that you have to look after, and we'll help you out that way. And the best thing to do is, if you're looking, if you see somebody online, come on down, spend some time with them, and we'll take it from there. This is my dog Dexter. He's 4.5, and he is from the Saskatoon SPCA. He used to live in Saskatoon, and when I was looking to adopt a dog, I'd actually went to look at a different dog. And this is one of those things, and we hear it a lot here at the Edmonton Humane Society as well, where sometimes a pet will find you and they'll come to you. And I'd actually went to look at a different dog, and Dexter was in the kennel next to him, and he was sitting there, and when I looked at him, he came up and he was very polite and gentle and didn't make a sound and just checked me out. And I was like, that's a really cute dog, so I want to see him. And we went to a room, a socialization room, where we could sit together, and he took to me right away and came up to me, and I, of course, fell in love with him, and I got him later on that day, as a matter of fact. And एडमिंटन ह्यूमन सोसाइटी एक रजिस्टर्ड चैरिटी है जो होमलेस और अब्यूज्ड एनिमल्स की हेल्प करती है और उन्हें घर और अच्छे केयर करने वाले फैमिली से मिलाती है। हर साल करीब 13,000 एनिमल्स की ये देखभाल करते हैं और इसके लिए उनके पास करीब 80 एम्प्लॉई हैं और करीब 500 वॉलंटियर्स की इन्हें ज़रूरत पड़ती है। क्या आपको एनिमल्स पसंद है? आपको उन्हें वॉक पे ले जाना, उनके साथ खेलना अच्छा लगता है और एडमिंटन ह्यूमन सोसाइटी की मदद करना चाहते हैं, तो आप यहाँ वॉलंटियर बन सकते हैं या तो इनकी वेबसाइट पर जाकर इन्हें फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। अगर आप अपने घर के लिए कोई पेट चाहते हैं तो खरीदने से दूसरा ऑप्शन है कि आप इनमें से किसी को अडॉप्ट कीजिए, जिससे इनको एक प्यार करने वाला घर और फैमिली मिलेगा और आपके घर में खुशियों की बढ़ोतरी होगी। Sherwood Ford is the largest Ford dealership in North America. At Sherwood Ford, customer satisfaction drives our success. आप अपने पर्सनल टैक्स रिटर्न एंड बिजनेस अकाउंटिंग के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। KB Accounting and Tax Services. नहीं, आज बस यूँ ही देखने आया हूँ। संगीत का प्रोग्राम है तो संगीत से जुड़ा हुआ हूँ, तो आना फ़र्ज़ बनता है। 2013 में फेवरेट सॉन्ग काफ़ी सारे अच्छे अच्छे गाने आए हैं, बहुत सारे गाने हैं अभी। ये जवानी है दीवानी के गाने अच्छे हैं, पार्टी वार्टी में ऐसे चलते हैं। बदतमीज़ दिल हुआ, फिर आशिकी 2 के गाने अच्छे हैं। हम तेरे बिन कहीं जी नहीं सकते, ये गाना अच्छा है।
हमें सिंगर्स को सिंगर रहने देना चाहिए और एक्टर्स को एक्टर्स, क्योंकि आजकल पिच करेक्शन बहुत हो रहा है और बहुत ही प्रॉब्लम होती है उससे, क्योंकि जब लाइव गाना पड़ता है तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। आई डोंट थिंक सिद्धार्थ इज नॉमिनेटेड, जो मुझे लगा कि शायद नॉमिनेट होगा लेकिन नहीं है वो। बट मैं परफॉर्म कर रहा हूँ आज सेकेंड टाइम इन अ रो आई थिंक ऑन द जीमा स्टेज, तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मेरा पहला बॉलीवुड का गाना है एंड मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला है विद सच लवली आर्टिस्ट, सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टुनाइट। मे बी नॉट अ रिग्रेट, नाउ देव टेकन अ कॉल, सो नो रिग्रेट्स, बट आई एम गोइंग टू एंजॉय माई सेल्फ टुनाइट। मैं मेरे बेटा का परफॉर्मेंस देखने वाला हूँ, हम लोग, मैं और मेरी बीवी। ही इज नॉमिनेटेड, बट हाँ मैं नॉमिनेटेड हूँ, भाग मिल्खा भाग म्यूजिक एंड भाग मिल्खा भाग बैकग्राउंड स्कोर, बट आई एम मोर एक्साइटेड अबाउट दिस। बहुत मज़ा आ रहा है, धूम तो इस साल बहुत मच गई है, बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्रीतम है, कटरीना है, यशराज है, इतना बड़ा बैनर है, और सबसे बड़ी बात है कि सब लोग गा रहे हैं इस गाने को। अभी भी मैं बैक स्टेज आई तो सब मिले धूम धूम करते करते, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और परफॉर्म करने को मिल रहा है तो और भी अच्छी बात है। तो आप प्लीज़ देखिएगा और आई होप आप सबको अच्छा लगे। मैं परफॉर्म नहीं कर रही, मैं ऑडियंस हूँ आज के दिन, और मैं देखने आई हूँ परफॉर्मेंसेस। और क्योंकि जीमा मेरे लिए बहुत खास है, म्यूज़िक अवार्ड्स है और मैं म्यूज़िक से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहता है जीमा का। सो मुझे बहुत खुशी है कि आज बहुत बड़ा अवार्ड्स होने जा रहे हैं स्पेशली सिंगर्स के लिए, और अच्छी बात है कि ऐसे अवार्ड्स होते रहें जिसमें सिंगर्स को रिकग्निशन मिले, सिंगर को पहचान मिले। सो आई थिंक जीमा बहुत अच्छा एक कार्य कर रहा है स्पेशली फॉर द सिंगर। एंड आज मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ, शो की ओपनिंग मैं करने जा रहा हूँ। मैं कभी अवार्ड्स लेता नहीं हूँ, मैं सिर्फ अवार्ड्स पे परफॉर्म करने आता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि न्यू कमर्स आएँ, नए नए सिंगर्स आएँ और वो अपनी पहचान बनाएं, अपना नाम बनाएं। एंड बट मैं शुरुआत करूंगा और आज गंदी बात गाना गाऊंगा, अगल बगल गाऊंगा और टू गाऊंगा। हम आज तीन जनरेशन के प्रोग्राम करेंगे जीमा में, फर्स्ट टाइम पब्लिकली लाइक दिस, रियली हैप्पी। जीमा से इट बी फैंटास्टिक, जैसे हमेशा होता है, द अवार्ड्स विल गो टू द राइट पीपल, फॉर श्योर, वी होप। This is a great thing to have just music awards. You know, it's a very big thing. Jima has been doing this for so many years. I've also performed for them in Delhi for Jima Awards. I also got Extempo Award that time, online awards of Hindustan Times, you know. So I really appreciate their efforts and that they are keeping it up, and it's growing bigger and bigger every time. एक्चुअली मैं कहना चाहूँगी कि जीमा अवार्ड्स मेरा सबसे फेवरेट इवेंट है, बिकॉज इट सेलिब्रेट्स म्यूज़िक, और म्यूज़िक मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और ये शाम बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है क्योंकि इतने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस होते हैं, इतने खूबसूरत गाने सुनने को मिलते हैं, इतना अच्छा टैलेंट देखने को मिलता है कि इट्स रियली स्पेशल और बहुत अच्छा लगता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्टर्स, इट्स अबाउट सिंगर्स, म्यूजिशियंस, इंजीनियर्स, ऑल दीज अमेजिंग टैलेंटेड पीपल। जैसे विश्व भर में ग्रैमी अवार्ड्स होते हैं, हमने जीमा का फंक्शन हमने ऑर्गेनाइज किया, और ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, क्योंकि म्यूज़िक हिंदुस्तान में एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है एंटरटेनमेंट का, और म्यूज़िक वर्ल्ड को उसको एक अवार्ड करना, उसको एक सम्मान देना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि यारियाँ पिक्चर को ऑडियंस ने गाने इतने पसंद किए और पिक्चर को हिट बनाया, और आज मैंने कहीं लिखा देखा था कि यारियाँ पिक्चर हाईएस्ट ग्रॉसिंग न्यू कमर फिल्म है जिनका कोई स्टारी बैकग्राउंड नहीं है, न्यू कमर्स का। और आज यारियाँ की परफॉर्मेंस है जीमा अवार्ड्स में, मेरी टीम की परफॉर्मेंस है, तो मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देखिए, आप फिल्म्स बनाते हैं और फिल्म्स में म्यूज़िक तो होता ही है, म्यूज़िक के बिना फिल्म्स अधूरी होती हैं, और म्यूज़िक हम सबकी ज़िंदगी का एक बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत हिस्सा होता है। हम सब म्यूज़िक लवर्स हैं। अगर मैं बोलूँगी कि सिर्फ मैं म्यूज़िक लवर हूँ तो आई बी लाइंग। आई एम श्योर इवन यू आर अ म्यूज़िक लवर, एंड म्यूज़िक इज़ अ वेरी वेरी इटर्नल पार्ट ऑफ एवरीवनस लाइफ। आप अपने इमोशंस, अपने एक्सप्रेशंस
म्यूज़िक के थ्रू ज़ाया कर सकते हैं। आप दुखी होते हैं तो म्यूज़िक सुनते हैं, आप खुश होते हैं तो म्यूज़िक सुनते हैं, आप क्लब्स में जाते हैं, डांस करते हैं तो म्यूज़िक होता है। तो म्यूज़िक इज़ एवरीवेयर एंड आई एम पर्सनली ए म्यूज़िक लवर। आई लव सूफी म्यूज़िक, आई लव रोमांटिक म्यूज़िक, आई लव सॉफ्ट म्यूज़िक, पाकिस्तानी म्यूज़िक, तो ऑल द काइंड ऑफ म्यूज़िक आई कैन नॉट लिव विदाउट म्यूज़िक एक्चुअली। You'll instantly notice certain amenities at Lexus South Point. The five-star atmosphere of luxury and vast selection of embodied excellence, of course. And your golf game might improve. Your Lexus in for first-class service and our complimentary car wash. Your wife might actually join you for a little personal maintenance at the South Point Spa. As a guest at Lexus South Point, you may notice you'll never want to leave. Think Lexus. Think the new Lexus South Point. Hi, good morning. This is Navjeen. I can assist you in all kind of immigration matters, which includes permanent immigration, PNP programs, work permit, spousal sponsorship. You can contact me at 780-399-5127 or my office line 780-468-3331. Hi, I'm Lily Perrick, mortgage specialist with the Minion Lending Center's Capital Region, the largest mortgage brokerage company in Canada. With over 100 lenders to choose from, I can offer you the best mortgage product at the lowest interest rate. With over 19 years experience, I know this business inside and out. A mortgage broker costs you nothing, but not using one can cost you tens of thousands of dollars. If you're looking to buy, refinance, invest, if you're employed or self-employed, I can help you. So don't hesitate to give me a call for any mortgage advice. दुनिया में कुछ ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने अपने कार्यों से हर किसी के दिल में जगह बनाई है। उनमें से एक हैं नेल्सन मंडेला। इंडिया में पिछले दिनों मंडेला वॉक फॉर फ्रीडम का आयोजन किया गया, जिसको एड्रेस किया था बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन ने। पेश है इसके ऊपर एक कवरेज हमारे अगले सेगमेंट बॉलीवुड में। I'd also like to mention that, as Sudhir was saying, we formed a very strong association for over 25 years with Sudhir and his dear friend and my dear friend, Anand Singh, who produced this film. Anand, Sudhir and myself, we perhaps had the very first concept from the Indian film industry in South Africa way back in 1990. And at that time, the country of South Africa was still reeling under the pressures of apartheid. And we were the first Indian group that were allowed to perform there. And this was possible primarily due to the efforts made by Mr. Nelson Mandela. And it was he who gave us the permission, and his party, the African National Congress, that gave us permission to perform there. Since then, of course, I had the very big honor to meet Mr. Mandela on two separate occasions, once at his residence, and those memories are with me always. He was a very generous and kind man, very humble. He signed a portrait of himself for me and sent it across to me. But really what was quite amazing and humbling was, on another occasion, when the African National Congress had lost a very prominent leader. I feel very privileged and very honored to be here today at the launch of this film in our country.
Privileged and honored because of the man that has been encapsulated in the film, his contribution to the world, to the universe, to society at large, to all people that believed in equality and dignity. And those were the things that impressed me the most. I have a long history with South Africa, and a very pleasant one indeed. And today is just a very formal moment, but I know that there have been many occasions with not just the people of South Africa, but indeed Mr. Nelson Mandela himself. I was in South Africa at that time, and we felt that it was only right for us to go and pay our condolences. So we drove across to the house, and as we reached the house, Mr. Mandela and his entire formal entourage was leaving the residence, and we were across the road, standing and waiting for his cavalcade to pass by. He was about to get into his car when he got out, and he noticed me across the road, and I was surprised that he could notice me. And he called out to me to ask me to come over. And as I was walking, he stretched his hand out across the bonnet of the car and said, "I hope you remember me," which was just unbelievably amazing. He was a very generous man, very kind man. The world will remember him as one of the greatest humans that we've had. I also had the honor, through Anant and Sudhir, to visit Robben Island, where Mr. Mandela was kept captive. I went to the cell where he was kept for so many years. I saw the mines that they had to work in and the kind of hardship that he had to face. And I'm sure that a lot of that will perhaps be shown in the film. And it really was a very emotional moment for me. And I've always felt that so long as there are human beings like Mr. Nelson Mandela alive in our universe, we have so much to learn from them, how we conduct ourselves and what they fought for, and the dignity and the respect that they left us with. I want to congratulate the makers and the artists, the two lovely artists here, who have been responsible for this film, and I hope you enjoy this film. It's been a great honor. Thank you very much. I'm very happy to be here. And to answer your question, this is a very important story to each and every South African. And I was born in the 80s during apartheid, and I grew up hearing so many stories about Nelson Mandela. And for me to be part of his story, part of his legacy, was more important to me than any other film that I've ever done. And to play a woman who the world hasn't seen, the woman that no one knows about, was a beautiful challenge, because then you get to see a different side of Nelson Mandela. You get to see the man and the younger person that most people don't know, because we remember the old Nelson Mandela only after prison. The most inspirational part of playing Madiba is just getting under the skin, getting to know the man at a stage where he had the potential to change the country. At a stage where we don't know him at that stage yet. He's still a 16-year-old initiate, he's still a 16-year-old boy who becomes the man that we don't know completely. And that's the man that it's like dynamite that hasn't been lit yet. And it's that man that is the most inspiring thing, which just means that we all have this explosion inside of all of us. It just has to be ignited. And for me, getting to learn that bit, and it's sort of like you sit there going, oh, if people know what's going to happen, and you that guy that's going, people know exactly where it's going to go. For healthy teeth and smiling face, meet Dr. Jatinder Singh Parhar, General Dentist, at Northside Edmonton and Southside Edmonton locations. At All Insurance, we specialize in your personal and commercial needs. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਆਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
Please stop by and visit one of our insurance professionals today and experience the all insurance difference. ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਹਾਰਮਨੀ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ Song of the Week ਹੈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਮੌੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇਸੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। अमन, ये कॉलेज के 3 साल कैसे निकल गए तुम्हें देखते देखते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं तुम्हें कितना पसंद करने लगी हूँ। आई लाइक यू अमन, आई लाइक यू। नहीं नहीं पूजा, मैं पिंड दा देसी जा मुंडा शायद तेरे प्यार दे काबिल नहीं। मैं मुंडा देसी सोहणीए नी ना मैं कपड़े ब्रांडेड पावां। मैं मुंडा देसी सोहणीए नी ना मैं कपड़े ब्रांडेड पावां। तू घुमदी विच सितारां दे, तू घुमदी विच सितारां दे, मैं खेतां नूं पानी लावां। मैं मुंडा देसी सोहणीए नी ना मैं कपड़े ब्रांडेड पावां। हटकदे नी तू जाके मैकड़ी कुड़िए बहंदी। पीजा हटकदे नी तू जाके मैकड़ी कुड़िए बहंदी। पुट चटनी पदीने दी, पुट चटनी पदीने दी, रोटी रुखी मिसी खावां। मैं मुंडा देसी सोहणीए नी ना मैं कपड़े ब्रांडेड पावां। बिना ब्रांड तो ना कोई गल करदी मुटियारे। साथों चले जाने ना तेरे नखरे बड़े ने भारे। साथों चले जाने ना तेरे नखरे बड़े ने भारे। तू टॉमी पाउंदी ऐ, तू टॉमी पाउंदी ऐ, काका कुड़ता पजामा पावे। मैं मुंडा देसी सोहणीए नी ना मैं कपड़े ब्रांडेड पावां। घुमदी ओटी ते तेरी उच्चियां दे नाल यारी। मेरी बिच मुरिंडे ते एवें लंघ गई जिंदगी सारी। मेरी बिच मुरिंडे ते एवें लंघ गई जिंदगी सारी। अगे बिठा के साइकिल दे, अगे बिठा के साइकिल दे, जैजी पूरा पिंड घुमावे। मैं मुंडा देसी सोहणीए नी ना मैं कपड़े ब्रांडेड पावां। मैं काका देसी सोहणीए नी ना मैं कपड़े ब्रांडेड पावां। ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ info@harmonytv.ca ਤੇ। ਹੁਣ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।